Good morning students and all my dear friends. Welcome to your own YouTube channel Voice of Students. और टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स के लिए विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड देयर इज लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग एंड विशेस फॉर यू. May God bless you unlimited success with lifetime happiness. And I hope you will definitely get success in your group discussion round. With these kind of blessings, we start the topic terrorism in India. First of all, we need to know what is terrorism in many more ways. Terrorism is a violent strategy used by various people and groups to achieve a certain goal. Exactly, terrorist अपने आप में एक violent एक हिंसक नीति है जिसके थ्रू वो बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट में लाने की कोशिश करते हैं और इसके पीछे एक निश्चित उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य के तहत वो अपने गोल पर वर्क करते हैं. Terrorism is the use or threat of violence that targets to spread fear in population and to advance a political, ideological or religious reasons. और जो आतंकवाद देखने को मिलता है जिसमें लोगों को धमकी दी जाती है, हिंसक कृत्य किए जाते हैं, उनका टारगेट होता है लोगों में डर का माहौल बनाए रखना. और कई बार इस तरह की चीज़ें किसी राजनीतिक उद्देश्य को लेकर, किसी विचारधारा को लेकर और किसी धर्म की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए इस तरह के कृत्य देखे जाते हैं. We need to understand that not all violent acts are terrorist act. Terrorism is more of a strategy than just a random act of violence, as it always involves some sort of political, ideological, and religious motivation. The reasons behind why a group or individual would carry out a terrorist act. हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सभी तरह की जो हिंसा होती है उसे आप आतंकवाद का हिस्सा नहीं मान सकते, लेकिन जो नीति, जो टारगेट, जो लक्ष्य लेकर इस तरह के अटैक किए जाते हैं जिसमें कभी किसी राजनीतिक विचारधारा, कभी किसी विशेष विचारधारा, कभी किसी धर्म विशेष को लेकर जो विचारधारा है श्रेष्ठता को साबित करना है, इन विचारधारों से प्रेरित होकर आतंकवादी हमले देखे जाते हैं और एक व्यक्ति या किसी ग्रुप के द्वारा इन आतंकवादी गतिविधियों का संचालन किया जाता है. Terrorism has been a worldwide problem, especially for a country like India, where terrorists get support and launched from Pakistan from its launching pads to intrude in India to harm the nation's property and lives. Exactly, भारत जो आतंकवाद झेलता रहा उसमें पाकिस्तान के द्वारा समर्थित जो आतंकवाद है, बॉर्डर पार्ट से उनके द्वारा जो लॉन्चिंग पैड से भारत में आतंकवादी घुसपैठ के लिए भेजे जाते हैं, उसके कारण भारत में लगातार आतंकवाद की समस्या बनी हुई है और उनका एकमात्र उद्देश्य देश के लोगों की जान लेना, देश की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, देश की छवि को विश्व स्तर पर खराब करना, ये एकमात्र उद्देश्य देखा जाता है. और पाकिस्तान लगातार बॉर्डर पार्ट से आतंकवाद को समर्थन देता आ रहा है. India has been suffering from terrorists, and that's why India always try to draw the attention of all the world to get together to curb it effectively. As terrorism has spread in every state of country, or we can say it has more effect on half of the states. It harms every country that then universal efforts can really control it. It demands combined effort to put control, but in the beginning we could not get attention towards it. But after the terror attack on the World Trade Center in New York in 2001, whole world saw and felt how dangerous it could be for each and every country. It made all the country feel if a country like superpower America could have been targeted by terrorism, then which country feels safe and claims for proper security for its people and property? That shocked, and that attack was quite dangerous and fatal. The attack proved that if not now, then never. As superpower America faced a brutal attack in which thousands of people died, Osama bin Laden played a big role behind this attack. Later, America took an aggressive action like surgical strike in Atamabad and caught him and finally killed Osama bin Laden. The recent attacks we can see in countries like church attack in Sri Lanka, attack in New Zealand, and recently a attack or terror activities in Germany proved that is a global problem. So if we talk about the
थिंग्स कि आतंकवाद किसी एक देश की प्रॉब्लम नहीं है। भारत हमें देशों को एकत्रित करने की कोशिश करता है। विश्व मंच पे हमेशा ही भारत ने आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई है और कई बार भारत ये कोशिश करता रहा है। एक समय तक भारत इस पर देशों को एकत्रित नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब अमेरिका पर खुद पर एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अटैक में जब अमेरिका ने अपने हज़ारों लोग खोए, अपने इकोनॉमिक लॉस को उसने फील किया, तब पता लगा कि आतंकवाद कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है। अगर एक सुपर पावर, एक एडवांस कंट्री अमेरिका इस तरह के हमले को नहीं बचा पाया, इस तरह के हमले को नाकाम नहीं कर पाया, पता नहीं लगा पाया, तो बाकी कंट्रीज़ किस हद तक ये मान सकते हैं कि उनके देश में वो पूरी सिक्योरिटी अपने लोगों के लिए प्रोवाइड करा सकते हैं, उनके लोग सेफ हैं। इस चीज़ ने सभी दुनिया के देशों से एक पर्दा हटाया कि उन्हें अब ज़रूरत है इस मंच पर एक होने की, उन्हें ज़रूरत है आतंकवाद के विषय पर एक होकर इसका सामना करने की। जब ये प्रॉब्लम यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल एफर्ट ही इस तरह की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकता है। एक कंबाइन एफर्ट, सब लोगों, सब कंट्रीज़ के साथ के एक एफर्ट से ही इस तरह की प्रॉब्लम को कब किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, रोका जा सकता है। और फिर अपने खिलाफ हुए आतंकवादी हमले के बदले में अमेरिका ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की और एक के बाद एक और आतंकवादियों को उन्होंने मारा, पकड़ा और बॉम्ब के थ्रू उड़ाया, ये बताता है कि अब सभी कंट्रीज़ को इस तरह के एक्शंस लेने की ज़रूरत है। किसी भी आतंकवादी हमले को तुरंत ही उसका जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। इन्हीं सालों में अपने कुछ अटैक देखे, जिसमें न्यूजीलैंड में हुआ अटैक, श्रीलंका में चर्च में हुआ अटैक और रिसेंटली अभी जो जर्मनी में एक्टिविटीज़ देखी गई, ये बताता है कि आतंकवाद किसी भी देश में कभी भी अपना विस्तार कर सकता है, अपना उसको शिकार बना सकता है। तो सभी कंट्रीज़ को इसके मामले में अलर्ट रहने की ज़रूरत है। So it's not about only India. The problem is like terrorism is worldwide. Every country is suffered less or more because of terrorism. But India has faced it so many times as Mumbai serial blast, Mumbai train bomb blast, Jaipur serial blast, Parliament attack, Uri attack, and the most recent and fatal attack in Pulwama. On 40th of February 2019, a convoy of vehicles carrying Central Reserve Police Force security personnel on the Jammu-Srinagar highway was attacked by a young Kashmiri turned terrorist suicide bomber named Adil Ahmed Dar. He was carrying hundreds of kilograms of explosives in a vehicle at Latopura in the Pulwama district of the Jammu and Kashmir state of India and hit the vehicle to the bus carrying security personnel. The attack resulted in the death of 42 CRPF personnel. Jaish-e-Mohammed, Pakistan-based Islamic terrorist group, has claimed the responsibility of the Pulwama attack. It is the deadliest terror attack on the state security personnel since 1989. जैसा कि भारत ने लगातार एक के बाद एक आतंकवादी हमले झेले हैं, चाहे वो मुंबई सीरियल ब्लास्ट हो, चाहे मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हो, जयपुर में होने वाले सीरियल ब्लास्ट हो या संसद पर हुआ हुआ हमला हो। उरी अटैक की आप बात कर सकते हैं, पठानकोट एयरबेस पर जो अटैक हुआ उसकी आप बात कर सकते हैं, होटल ताज अटैक भी एक बहुत हिंसक और बहुत बड़े लेवल पर किया गया अटैक था। और अगर लेटेस्ट अटैक की बात करें तो पुलवामा में जो 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ कन्वे पर जो व्हीकल के थ्रू अटैक किया गया, जिसमें सुसाइड बॉम्बर आदिल अहमद डार, एक लोकल कश्मीरी जो कि एक आतंकवादी के तौर पे ट्रेन किया गया और उसने इस कृत्य को अंजाम दिया, जिसमें भारत को अब तक की सबसे बड़ी क्षति हुई। सोल्जर्स के तौर पे भारत ने अपने 42 सोल्जर्स खोए। ये बताता है कि कितना डेंजरस, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये हमारे देश के लिए कि अगर सेना, आर्मी, इनकी कैंप्स, इनके एयरबेस, इन पर अटैक किया जाता है तो आम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम किस हद तक समझ सकते हैं, आम लोग कितने सुरक्षित हैं, ये एक सवालिया चिन्ह लगा देता है कि आतंकवाद कितनी गहराई तक अपनी जड़ें भारत में जमाए हुए हैं। As usual, Pakistan has denied any role in the terrorist attack and it's asking for more troops. But recently, one of its politicians accepted in parliament that the Pulwama attack was pre-planned and Pakistan had supported it, even they take it like a pride moment. However, as the chief of the terrorist outfit Masood Azhar roams free in Pakistan,
India as well as other countries across the globe who are the members of United Nations organization have all the reasons to believe that anti-terrorist planning and actions are sponsored by Pakistan and its spy agency ISI, as the country has neither arrested Masood Azhar nor has handed him over to India. पाकिस्तान ने इस आतंकवादी हमले में अपनी भूमिका को नकार दिया, लेकिन अभी फ़िलहाल ही पाकिस्तान के ही एक मेंबर ने, एक पॉलिटिशियन ने पार्लियामेंट में पुलवामा हमले को अपनी बहुत बड़ी सक्सेस बताया, पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत बताई और अपने आप को बहुत बड़ा प्रयास बताया। उनके लिए पुलवामा हमला एक गर्व का विषय था और उनके लिए उस आतंकवादी हमले में जाने वाला सैनिक अपने आप में एक सैनिक था, एक शहादत लेने वाला व्यक्ति था। ये पाकिस्तान के आतंकवाद पर चेहरे को फिर से नकाब हटाता कि एक तरफ वो पीस की बात करता है और दूसरी तरफ लगातार आतंकवादी गतिविधियों में वो भूमिका निभाता है, वो सपोर्ट करता है। यूएनओ ने भी माना कि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को स्पॉन्सर कर रहा है। तो एक सवाल उठता है कि उसके पाकिस्तान को दी जाने वाली जो हेल्प, जो फंडिंग है, उसका मिसयूज़ हो रहा है। वो फंडिंग जो सपोर्ट के तौर पे बाकी कंट्री से वो लेता है, उसका टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में ही यूज़ हो रहा है। इस तरह की फंडिंग को रोका जाना चाहिए, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कंट्रीज़ में डाल देना चाहिए ताकि वो आगे से इस तरह के आतंकवाद को स्पॉन्सर ना कर सके। India is the worst sufferer of terrorism, and the state of Jammu and Kashmir, adjacent to Pakistan border, is suffering more due to terrorist attack. जम्मू कश्मीर ये ऐसे एरियाज हैं जो भारत के सबसे ज़्यादा आतंकवादी प्रभावित इलाकों में आते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं। बॉर्डर के पास होने से पाकिस्तान के द्वारा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट किया जाता है और घुसपैठ करवाई जाती है। लॉन्चिंग पैड से डायरेक्ट आतंकवादी भारत की सीमा में भेजे जाते हैं। Terrorist attack on Uri security forces camp that resulted in surgical strike, attacks on innocent Jammu and Kashmir people, the Pulwama terrorist attack by Jaish-e-Mohammed, whose the leader lives in Pakistan, on the CRPF convoy killing 42 security personnel, have left the country in the state of shock. और भारत का ये एरिया जो कि लगातार आतंकवादी गतिविधियों के संचालन का केंद्र रहा है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ के लोगों के साथ भी, इनोसेंट लोगों को भी आतंकवादी टारगेट बनाते हैं, लोकल लोगों को डराते हैं, उन्हें पैनिक एटमॉस्फेयर में रखते हैं और उन पर एक प्रेशर मेंटेन किए रखते हैं। और ये देख सकते हैं कि इस तरह से भारत के कुछ एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा आतंकवाद अपनी जड़ें जमा चुका है और ज़रूरत है अब इसके खिलाफ एक कंप्लीट एक स्ट्रेटजी के साथ एक्शन लेने को, ताकि इस तरह के आतंकवादी गतिविधियों को समय पर रोका जा सके। Once we face any terror attack or be victim of it, we can feel whole bunch of emotions including anger, fear and confusion. Allow yourself to feel however you feel. और जब इस तरह के हमले होते हैं तो देश में कई तरह की भावनाएं देखी जाती है। एक तरफ हम अपने सैनिकों को खोने पर संवेदना, दुख के माहौल में होते हैं, एक गुस्सा होता है, एक डर भी होता है और ये माहौल हमें अपने बाकी योजनाएं, हमें अपने डेवलपमेंट के इश्यूज से भटका देता है और इस तरह से आतंकवादी अपनी योजनाएं सफल बनाने का प्रयास करते हैं। Recent extension in terrorist activities across the globe in the name of religion has put up a question mark on the efficiency of the government. इन्हीं दिनों जो आतंकवाद का विस्तार हुआ और धर्म के नाम पर जो आतंकवाद की गतिविधियां बढ़ी, धार्मिक नाम उन्हें दिया गया, धर्म की श्रेष्ठता, एक धर्म द्वारा दूसरे धर्म के लोगों को नीचा दिखाया जाना, उन पर अपनी उनको डोमिनेट करना और अपनी सुपीरियरिटी के लिए जो विचारधारा पनपी, उस विचारधारा ने आतंकवाद को एक नई दिशा दे दी है। Connectivity and doubts about the motives of these terrorists, the terrorists impose their own rules, do not allow the society to live in a peace and grow, try to stop spread of education, earn money from outside sources just to create terror in the country and to spoil peaceful atmosphere. लगातार ये आतंकवादी अपनी विचारधारा लोगों पर थोपने की कोशिश करते हैं, एक देश को इस तरह से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और वहाँ के अराजकता फैलाते हैं, वहाँ की शांति को भंग करने का प्रयास करते हैं और गलत तरह से प्रेशर मेंटेन करके, फोर्स करके आतंकवादी गतिविधियों के थ्रू वो अपनी अर्निंग, अपने मनी सोर्सेज बनाए रखने की कोशिश कर सकते हैं और करते आ रहे हैं। और लोगों को जो शांति का माहौल है, लगातार उनको वो उस शांति के माहौल को भंग करने की कोशिश करते हैं अपने आतंकी हमलों से।
Terrorism is being spread in the name of religion and to earn quick money without good and hard work. जैसा कि आतंकवादी लगातार गतिविधियों को अंजाम देते आ रहे हैं, कभी धर्म के नाम पे तो कभी बहुत जल्दी शॉर्टकट के थ्रू पैसा कमाने के लिए वो बिना मेहनत किए इस तरह के कृत्य को करते आए, ताकि इन गतिविधियों के आधार पे वो अपना वर्क, अपनी जीविका चला सकें. Youth fall in the net of certain terrorist outfits who brainwash them, and they become the killer of their own community and civilization at large without knowing the impacts of their misdeeds. और बहुत सारी यूथ को वो ब्रेन वॉश कर देते हैं, उनके दिमाग से खेलते हैं, उनके दिमाग को इस तरह से ट्रीट करते हैं, नियंत्रित करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो जो कर रहे हैं अपने ही कम्युनिटी और सिविलाइजेशन सभ्यता को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने ही लोगों को मार रहे हैं, और इस तरह उन्होंने अपने आप एक खतरा उत्पन्न कर दिया है, खुद को भी वो संकट में डाल रहे हैं. In their mind, they think they are doing good, as their faith has been misguided by the terrorists, despite knowing that it is a sin to kill innocent people who become victims of their fanaticism without any fault of their. They continue doing the same act till they come into a target of security forces and killed. जैसा कि जब वो इस तरह के कृत्यों को अंजाम देते हैं, जब उन्हें ब्रेन वॉश करके आतंकवादी गतिविधियों में लिफ्ट किया जाता है, तो उन लोगों को पता ही नहीं होता कि वो जो कर रहे हैं वो उन अपनी विचारधारा लेके चल रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, वो उनकी रक्षा के लिए, वो उनके धर्म की रक्षा के लिए, वो उनके देश के लिए उनकी तरफ से कुर्बानी है, शहादत है. इस सोच के साथ उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें आगे भेज दिया जाता है, लेकिन वे उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो जो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वो पाप है, क्योंकि कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म के लोगों, कम्युनिटी के लोगों को नुकसान पहुंचाना, उन्हें हर्ट करना, उनकी जान लेना, इसकी इजाज़त नहीं देता है. और अगर ऐसा किया जा रहा है तो वो गलत है और वो पाप है. India, USA, France, Afghanistan, Britain, Russia, and almost half of the world is suffering from the terrorism. The terrorists who have no religion of their own terrorize the local people to force them to support their acts, due to which innocent people are either killed or have to live their life under terror पैनिक एटमॉस्फेयर. जैसे कि इनोसेंट लोगों को लगातार डराया जाता है, धमकाया जाता है, और आतंकवाद से वो भी बहुत पीड़ित हैं, और उन पर अपनी विचारधारा थोपी जाती है, उनको फोर्स किया जाता है ताकि वो लोग या तो उनको सपोर्ट करें या फिर उनके द्वारा मारे जाते हैं अगर वो सपोर्ट नहीं करते हैं, या अपनी ज़िंदगी को इसी तरह के आतंकी माहौल में, इस पैनिक एटमॉस्फेयर में जीते हैं. Terrorism is the emerging issue globally at the moment. The rise of terrorism in the recent years and more terrorist organizations. The main objective of terrorism is usually to gain publicity for some causes. कभी कभी आतंकवादी अपना ध्यान सिर्फ पब्लिसिटी हासिल करने के लिए, वैश्विक स्तर पे अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए भी ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं. Although there can be other motives too. Jonathan R. White in this book Religion and Terrorism, the question of why religious people commit violence. जोनाथन आर वाइट ने अपनी बुक रिलीजन एंड टेररिज्म में सवाल के बारे में बताया कि क्यों धर्म के नाम पर कुछ लोग हिंसक कृत्य करते हैं और भगवान के नाम पर ऐसी आतंकवादी वारदातों को अंजाम देते हैं. इन द नेम ऑफ दियर गॉड, टेकिंग द लाइव्स ऑफ इनोसेंट विक्टिम्स एंड टेरराइजिंग एंटायर पॉपुलेशन. और इस तरह से वो आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा पूरी जनता, आवाम को पैनिक करने की कोशिश करते हैं. Many different kinds of events are labeled acts of terrorism, instigating from their religious difference and frustration. बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियाँ, बहुत सारे आतंकवादी हमले धार्मिक वैचारिक मतभेद के कारण किए जाते हैं और निराशा के कारण किए जाते हैं. These kind of attacks are an international and worldwide phenomenon, and we find the place like India, Pakistan, Afghanistan, Iraq, Israel, the United States of America, etc. fall victim to such attacks all the time. और लगातार अब जो देश हैं जिसमें खासकर भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इज़राइल, सीरिया, यहाँ पर लगातार आतंकवादी हमले देखे जाते हैं और लगातार ये देश आतंकवाद जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं. खुद पाकिस्तान जो कि टेरर को सपोर्ट करता है, स्पॉन्सर करता है, सबसे ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट, सबसे ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियाँ वहाँ देखी जाती है. और अभी कुछ ही साल पहले कराची में आतंकवादी हमले में, स्कूल में हमले में खुद पाकिस्तान को अपने बहुत सारे निर्दोष
बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे थे उन पर हमला किया गया, उनको मारा गया। तो खुद पाकिस्तान भी इस आतंकवाद से बच नहीं पाया जो उसी के द्वारा स्पॉन्सर्ड और सपोर्ट की गई थी। आज वो खुद इस आतंकवाद की समस्या उसमें पूरी तरह से उलझा हुआ है। Terrorism and religion. Terrorism are viewed as victorious and exaltation in the eyes of the people who are supportive of the religion. There are various terrorist groups operating in India, Pakistan, Afghanistan, and Israel, and they have been targeting either the people of other religion और द क्राउडेड प्लेसेस। लगभग इन्हीं देशों में बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियां देखी जाती है। या तो धर्म के नाम पर वो लोगों को टॉर्चर करते हैं, टारगेट करते हैं, या किसी भी पब्लिक रश भीड़ भाड़ वाले इलाके को अपना टारगेट बनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज नुकसान वो कर सकें। पब्लिक फियर इज़ की टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ टेररिज्म, कि लोगों में दहशत का माहौल बना देना ही उनकी एक साइकोलॉजी बन गया है। The word terror implies fear, which the entire society suffers from, as this is the object of any terrorist. The threat of harm to innocent people is what makes terrorism powerful. और लोगों में जो दहशत का माहौल, डर का माहौल वो बना देते हैं, उसी को अपनी ताकत बनाते हैं और लोगों से सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं, उन्हें फोर्स करते हैं। The glaring examples are the 9/11 attack causing the fall of World Trade Center in New York, 26/11 attack on Mumbai where hundreds of innocent people died for no fault of their attacks on the parliament. On the parliament attack in the New Delhi where the many innocent security personnel died. और लगातार ये 3 हमले बताते हैं कि किस लेवल पर एक देश को नुकसान उठाना पड़ा। जहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुए हमले में अमेरिका को अपने हज़ारों नागरिकों को खोना पड़ा और इस बिल्डिंग को, जो कि इकोनॉमिकल या वर्ल्ड पर एक इकोनॉमिकल इम्पैक्ट रखती है, वो डिस्ट्रॉय की गई। भारत पर 26/11 के हमले में भारत ने 100 से ज़्यादा न केवल अपने नागरिक खोए बल्कि विदेशी जो गेस्ट के तौर पे यहाँ पर आते हैं टूरिस्ट, उनको खोया और पूरी भारत की इमेज विश्व स्तर पर ख़राब करने की कोशिश की गई। भारत को एक ऐसे देश के रूप में पेश किया गया जहाँ पर सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है और वहाँ जाना सेफ नहीं है। इस तरह से भारत की इमेज को ख़राब और स्पॉइल करने की कोशिश की गई। वहीं संसद पर हुए आतंकवादी हमले में भी हमने अपने सुरक्षा गार्ड्स को खोया जो देश की रक्षा के लिए शहीद हुए। None of the top terrorists living in any country have allowed their children to move on the path of terrorism. ये देखा जाता है कि जो खुद आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं वो अपने बच्चों को इस तरह के मार्ग पे नहीं आने देते हैं और उन्हें बेहतरीन तरह से पालने के लिए उनको कहीं और भेजते, कहीं और रखते हैं, लेकिन लोकल लोगों को, इनोसेंट लोगों को वो मिसगाइड करके इस तरह के मार्ग पे लेके आते हैं। But they meet women just to push the innocent young people to march on the path of terrorism in the name of religious conclusion. If we focus the core to find the solution, if we go in the depth, terrorism is an emotionally charged word that is frequently used to political and socially reasons by somebody or group. कभी कभी किसी सामाजिक विचारधारा से, तो कभी किसी अलग विचारधारा से, कभी किसी राजनीतिक उद्देश्य से एक ग्रुप या लोगों के द्वारा या एक व्यक्ति के द्वारा आतंकवादी गतिविधियों में खुद को लिप्त किया जाता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड वाई सो मैनी मैन, वीमेन एंड इवन चिल्ड्रन आर ड्रिवन इनटू सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस, कि किस तरह से कभी कभी औरतें, बच्चों, मासूमों को इसका शिकार बनाया जाता है और उसके मार्ग पे लेके आते हैं। And that there must be some reasons why they would resort to such extreme violence. Has it become a norm of these people? Perhaps no one can ever answer these questions. A person would have to be hurt a lot, her family taken away, and be really desperate before she or he attempts a suicide bombing. As history has proved us with many examples of great acts of violence that have been conducted in the name of religion. इतिहास ये बताता आ रहा है कि कितनी ही बार कभी धर्म के नाम पे, कभी इसको श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए, कभी दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने के लिए, रिलीजियस सुपीरियरिटी कायम करने के लिए आतंकवादी हमले होते आ रहे हैं और हम इनका सामना करते आ रहे हैं। There have been great acts of martyrdom which are reflected in the psyche of the terrorism and suicide bomber of today. हाँ, उनके माइंड को इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि उन्हें जो लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो एक शहादत है, वो जो कर रहे हैं वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने देश, अपने रिलीजन की रक्षा के लिए कर रहे हैं, और इस तरह से उनके कृत्य को उनकी मेंटलिटी में एक महान कृत्य के रूप में पेश किया जाता है।
Many people seems to side with the terrorist act as they think they are फ्रीडम फाइटर्स फाइटिंग फॉर दियर राइट। हाँ, इस तरह की सोच के साथ उनको आगे बढ़ा देना कि वो जो कर रहे हैं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो फ्रीडम फाइटर हैं और अपने देश की बेहतरी, अपने देश की तरक्की के लिए वैसा कर रहे हैं, जो कि एक गलत सोच से ट्रीट किए जाते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत कंसिडरेशन के साथ उनका ब्रेन वॉश करके उनको इन गतिविधियों में लिप्त कर लिया जाता है। अपनी नज़र में वो सही होते हैं पर रियल मायनों में वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत और पाप है। If we talk about the some more reasons, the blind followers is one of the reasons where people find blindly follow a someone or a person, and if the person misguides them, they easily they are easily taken into his talks. Whatever that person, particular leader wants, they just are ready to do blindly without considering and without realizing the consequences. So that kind of wrong leader can easily misguide the people and can take them into wrong path. If we find some other aspects of terrorism or some other reasons, the one more is poverty. A country who is suffering from poverty, where people don't have two times food and there are no sources, that time, or a country like that definitely faces a problem of poverty, and then people easily can be taken onto wrong path. Once they don't have two times food, they try to arrange it anyhow, and they can be easily targeted by antisocial elements. When they involves in crime, from crime they can be easily converted into a terrorist. One more thing, we can find there is lack of moral education, that people are intelligent today, schools are focusing to get the marks only. Once we need to go for moral education, in which first we need to make a positive pillar, positive citizen for the nation. Before making an intelligent brain, we need to make and we need to make and build good characters in our citizens, so they cannot be misguided by any antisocial elements. They will keep countries first as priority. Here we need to make our security system advance, as well as our forces should be given full of the freedom to take any kind of strict action to give befitting reply to any terror attack. They must try to expose them. Our security forces, they should be alert, advanced, and our intelligence agencies, they must be on also on alert mode. They must keep on checking. They should not wait for the attacks. Even they should try to search and find before they could implement it. Before the terrorists, they could implement their activities. As terrorism has spread and spread, terror activities are organized in many states. They choose or a place like public place, market, or any similar type of place. So the public must be alert. If they find anything or person suspicious, they should not ignore, as they are to depart from that place. They have some duty to inform police. With support of each and everyone, we can really control a problem like a problem like terrorism. So everyone has to do some effort. With the combination, with the effort of police and the support of public support, with the support of every citizen, we can we can just make it, we can make the terror activities fail. We can stop it, or we can contribute to the police. We can help them. With that kind of support and cooperation, we can really control a problem like terrorism. Even every country needs to support it. Every country needs to stand here together to give befitting reply to terrorism. If we talk about the, the public support, we find that a place like Jammu and Kashmir, where terrorists, they were getting the public support, but once the army, they took strict action, and they they made the families understand that their children are on the wrong path. They just talked and went for the discussions, and the result came as many of the terrorists in Jammu and Kashmir, they have surrendered, and
as well as the family members, they are trying to make them understand, they are trying to make their children understand that this is the wrong path they have chosen. So with the public support, with the local support, with the family member support, we have seen that terrorism is decreasing day by day in Jammu and Kashmir. Many of the districts and areas has been announced terror free. So that is the right policy. That first we have a two kind of policy in which army and soldiers, they are making them understand, they are telling that's the wrong path, they are connecting, and discussions, they are going for the discussions with the family members, and with these family members support, we are feeling that many of the terrorists, they have surrendered in Jammu and Kashmir in couple of years, according to a data where there were approximately more than thousands of terrorists, active terrorists in 2017 or 18. At present, there are nearby 100 terrorists, active terrorists in Jammu Kashmir. It tells us how we are getting the positive changes in Jammu and Kashmir. Earlier, we used to face so many attacks in our metro cities, nearby cities, but we have seen that the problem like terrorism has been limited, it has been controlled, and we can see there are some incidents keep on taking places in Jammu and Kashmir, but other states have most of the peace, and now terrorists are not getting freedom or choice, or they don't have any way in which they can intrude, or they can come into the metro cities, and again they can do serial bomb blast. Now we are on alert mode. The security forces, they have given full of the freedom, as well as they have a mentality in which they try to understand they have full of the freedom to take any kind of strict action. Those who are still joining terrorism, those who are still part of terrorism, those who are still participating in terror activities and training camps, the two back-to-back surgical strike airstrike proved that this India has changed its policy. Today, India works with a policy like zero tolerance against terrorism. We are not ready to tolerate terrorism even 1%. We are quite strict in this matter, as well as an operation, search operation in Jammu and Kashmir is being done by army. They have full of the freedom to find, to search any place. They can go suddenly, so they can find the terrorists, they can search them, and they can kill them. That kind of changes make us feel that today's scenario has been changed, but still time by time, or we can say at least one or two attacks we face in an year, and we have to see the sacrifice of our soldiers. So I can say that we need still some more awareness, we need to pay some more attention, we need to make our forces more advanced, and our security system must be more alert, more updated, high tech, so we can become a strong country that can fail, or that can attack the terrorists even they attack on our soldiers, on our people. So with that kind of way, with public support, with a maturity, and with a proper activeness, we can control a problem like terrorism. Here, with the contribution of every country, a worldwide problem, terrorism can be easily controlled. So with this kind of aspect, I would like to finish my topic. We'll meet tomorrow with any other new topic. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.